Welcome back. We can now bring you some live images from Moscow. We can see on your screen over there the Russian President Vladimir Putin addressing the media. It's a statement that a prepared statement that he's reading out, and we expect Prime Minister Modi to also address the media in a little while from now. Putin is speaking in Russian right now. We'll try and bring you a translation of that in a little while from now. This visit, absolutely crucial for both India and Russia. Several key deals on the card. Russia is a key player as far as nuclear energy in India is concerned. Bilateral trade between the two countries has not been up to expectations, and there is a sense that both leaders would like to step that up considerably. That apart, there are important defense deals in the anvil between India and Russia. How many of those will actually go across, that remains to be seen at this stage. So this important announcement taking place as we speak now in Moscow. Let's just listen in for a little bit before I bring you a quick story on what are some of the key defense deals that both sides are looking at. If you could just raise audio for a few moments. Один из них – это уровень безработицы. Мы понимаем, что это производная от очень многих составляющих. Он находится у нас на весьма низком уровне 5,6%. All right, we're going to come back to Putin and Modi speaking in Moscow in a little while from now. Let's just take a look at some of the key defense deals that both countries are looking at. How many of these will go through? Just why are they important for India? INS Chakra, India's Russian-built Akula II class nuclear attack submarine, the most powerful submarine of its class in the Indian Ocean. Now India is negotiating with Russia for lease of a second Akula. The price of this new lease is unclear, but it's linked to the acquisition of this. 3 more Kriva-class frigates, several of which are already in service with the Indian Navy. For decades, Russia has been India's principal defense partner, providing us with state-of-the-art weapon systems like this, the aircraft carrier Vikramaditya and its complement of MiG-29K fighters. But now India wants more. 5 systems of what has been described as the crown jewels in Russia's military arsenal. The S-400 ballistic missile system. It's a deal which could be worth close to $5 billion. The S-400 will provide India with a ballistic missile shield in the areas where it's deployed. One deal that's almost a certainty is the finalization of a contract for as many as 200 Kamov Ka-226 choppers, which you see here. These will be the cornerstone of India's Make in India policy and will be manufactured in India with a domestic partner. The Kamov is meant, among other things, to replace obsolete Indian Air Force and Army Cheetah helicopters and fly to high-altitude areas like the Siachen Glacier. But what is a cause of concern is the future of the Sukhoi stealth aircraft deal, meant to be a joint development project for which India has already invested $295 million. All right, the Prime Minister has begun speaking in Moscow. Let's listen in. सुरक्षा के क्षेत्र में हम भारतीय रूस के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हैं। मैं इस यात्रा में सुरक्षा क्षेत्र में अपने भागीदार देश रूस को भारत की आर्थिक प्रगति में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करने के लिए आया हूं। रूस उन बहुत सारे क्षेत्रों से आगे हैं जिनमें भारत को अभी बहुत प्रगति करनी है, जैसे कि रक्षा क्षेत्र, एरोस्पेस, आईटी, हैवी इंडस्ट्री। अभी तक हमारी भागीदारी हाइड्रोकार्बन में रही है, लेकिन अब हम उसे हार्ड कार्बन में भी ले जाना चाहते हैं। इसके लिए हमने स्पेशल नोटिफाइड जोन स्थापित किया है ताकि डायमंड का सीधा ट्रेड भारत और रशिया के साथ हो। हमारी सरकार बनने के बाद पिछले 18 महीनों में बहुत से आंतरिक एवं बाह्य समस्याओं से निपटने का रास्ता खोजा है। इन समस्याओं से निपटने के लिए हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं और उन रिफॉर्म्स की दिशा भारत के ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है। इन प्रयासों के चलते हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.4% रही है, जो बड़े देशों में
सबसे ज्यादा है। IMF एवं वर्ल्ड बैंक के और भी बेहतर आशाएं दिखाई है। बहुत से आर्थिक मापदंडों पर हम करंट अकाउंट डेफिसिट हो या इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट हो, भारत का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। ये अपने आप नहीं हुआ, इसके पीछे हमारे बहुत से सुव्यवस्थित कार्य हैं। FDI के क्षेत्र में हो या टैक्सेशन के क्षेत्र में हो या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में हो, हमने इन सारे क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग से कड़ी मेहनत करके परिणाम हासिल किए हैं। हमारा मकसद है हमारे देश के युवा हाथों में को रोजगार देना। उसके लिए हमने मेक इन इंडिया का कार्यक्रम भी चलाया है। हम भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2016 के विश्व बैंक के रैंकिंग में हम 12 स्थान ऊपर गए हैं। विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर देश को मुहैया कराने का हमारा सबसे बड़ा काम है। इसके लिए हमने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की है एवं टैक्स फ्री बॉन्ड भी लेकर आए हैं। हमारे इन प्रयासों को चलते भारत की आर्थिक साख विश्व में बहुत ऊपर गई है। विश्व की बहुत सारी संस्थाओं ने हमारे प्रयासों को सराहा है। FDI में 40% की बढ़ोतरी हुई है। हम अब तीव्र गति से बढ़ने वाली आर्थिक व्यवस्था बन चुके हैं एवं ब्रिक्स में हमारा स्थान जो डामाडोल हो रहा था वह स्थिर हो चुका है। विकास की इन संभावनाओं का लाभ आम आदमी को मिले, इसके लिए हमने डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम अपनी टैक्स व्यवस्था को पारदर्शी, स्टेबल बनाएं और दुनिया में व्यापार के लिए सरल देश बनकर आगे आए। रूस एवं भारत की क्षमताओं एवं संभावनाओं को सामंजस्य की बहुत गुंजाइश है। रूस के द्वारा बहुत सारे क्षेत्रों में मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप है। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम अच्छे और खराब समय में एक साथ रहे हैं और उसे बैलेंस करने का एक अच्छा अवसर है। रूस के हीरों की चमक भारत में एवं भारतीय अर्थव्यवस्था की चमक रूस में फैले, ऐसी मेरी इच्छा है। आप लोग CEO फोरम को फिर से एक बार सक्रिय किया है। हम चाहेंगे कि ये नियमित हो, असरकारी हो और उस दिशा में जो भी हमें करना होगा हम भी करेंगे। एक सुझाव जो आप लोगों के माध्यम से आया है कि बाइलिंगुअल पोर्टल ऑनलाइन व्यवस्था खड़ी की जाए ताकि रशियन भाषा में और भारतीय भाषाओं में अगर हम अपने व्यवसाय, व्यापार, रोजगार, विकास की बातें करेंगे तो शायद दोनों देशों में इसको बल मिलेगा। CEO फोरम में एवं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हमारी वार्ता में रूस द्वारा हमारे मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश की इच्छा जताई गई है। मैं इसका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। हम अन्य कॉरिडोर को विकसित कर रहे हैं जैसे चेन्नई बेंगलोर, अमृतसर कलकत्ता। मैं इसके लिए भी आपको निवेश के लिए मैं निमंत्रित करता हूं। आपके इंडस्ट्रियल पार्क में भारतीय कंपनियां निवेश करें तो ये हमें खुशी होगी, क्योंकि ये दो तरफा होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि CEO फोरम में आज वो विस्तार से आपकी बातें हुई हैं वो बहुत ही परिणामकारी होगी और दोनों सरकारें इस बात को आगे बढ़ाने में जो भी हो सकता है करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Благодарю вас, господин Моди. Сейчас я прошу взять слово Владимира Петровича Yevtushenkova, председателя Совета директоров АФК «Система». Прошу вас, Владимир Петрович. Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, большое спасибо за возможность сказать всего несколько слов в столь представительной аудитории.
All right, you just heard the Prime Minister speaking over there in Moscow. They are back now speaking in Russian, and we'll try and bring you the main excerpts of what exactly has been going on over there in a little while from now. President Vladimir Putin has already spoken. The Prime Minister of India, Narendra Modi, speaking about where Russia stands as far as aerospace, IT, defense is concerned. Russia, he says, is clearly ahead. He's pitched his Make in India program. He says it is in India's interests to become a manufacturing hub. He also spoke about the potential for Russian contribution in Indian industrial parks which are being developed. However, at this stage, there is nothing specific in terms of the deals which the two countries would be looking at. As soon as that becomes apparent, we will bring you more details. But the images that you see on your screen at this stage coming in from Moscow with President Vladimir Putin of Russia, Prime Minister Narendra Modi, who leads a very large delegation to Russia, talking at length about a host of key issues over there. Let's just raise audio again just a little bit to get an idea of what's happening in Moscow. A lot of it is in Russian. We can see Anil Ambani over there. He is among several key industrialists who are present in Russia to be part of this project. The Ambanis would likely be tying up with Kamov helicopters for the Make in India manufacture of 200 Russian Kamov Ka-226 helicopters. That's a deal that's likely to ultimately go through. The head of Bharat Forge also over there among other industrialists as India and Russia try and take their relationship forward. Let's just raise audio for a bit and get an idea of what's happening. And as I mentioned, we'll bring you the key parts of what has transpired here in Moscow in a little while from now. Более 300 миллионов абонентов. Это действительно огромный проект, который позволит и создать и в Индии абсолютно с помощью семьи Амбани нас абсолютно качественно новую цифровую сеть, которой сегодня, честно говоря, в стране нет. Да, я не собираюсь останавливаться на тех проблемах, которые есть, потому что господин премьер-министр в курсе этого дела, что у нас есть проблемы с регулятором. И нам непонятна здесь их позиция, потому что мы чувствуем определенное дискриминационное отношение к нам. Но я надеюсь, что вмешательство господина премьер-министра позволит, так сказать, эту проблему решить, и мы сумеем с господином Амбани действительно создать крупнейшую сеть. Но мы работаем не только в области телекоммуникаций, мы работаем в области других инновационных технологий. И тот опыт, который мы приобрели у нас в стране, создавая такие большие проекты, как безопасный город, безопасный транспорт, как строительство центра управления кризисными ситуациями и так далее. Мы все это предложили нашим коллегам из правительства Индии, и я хочу сказать, что наши контакты и с советником по национальной безопасности Мандювалом, и господином премьер-министром, и с другими министрами, они показывают, что в этом есть интерес, и при поддержке обоих сторон мы могли бы реализовать целый ряд инновационных проектов в Индии и в гражданском секторе, а не только в секторе, как говорят, специальном оборонном, где тут все ясно. All right, the images that you are seeing are from Moscow. As I mentioned, the Prime Minister over there on the annual visit. It's done in alternate years. On 1 year, the Russian President comes here. The Indian Prime Minister goes there on every second year. What exactly is going on over there? Some of the key points we'll bring you in a little while from now. But it's time for us to move on to the buck stops here. Well, good evening.